क्या ले लूं? Okay. Yeah. चला। And hold on. If you have to get a phone call तो क्या करवा? ठीक है, चलो. हाँ लाइव है। Let's. लाइट ठीक है. हाँ हाँ सब ठीक है। लाइव है अपन। ठीक है. ओके. लाइव है अपन. हाँ लाइव है। We're actually live on YouTube. Are we at 9 p.m. Indian Standard Time? इसके आगे बात पहुंच गई है अपनी बच्ची पे। बात आगे पहुंच गई है. अच्छा. लग रहा है क्या कि मैं फॉरेन में बैठा है? आज ऐसा लग रहा है आप फूल लिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई ओयो में बैठे हो। ओयो लग रहा है बेंच. हाँ, ऐसे लग रहा है। देखो ना पूरा पीछे वो टेबल लैंप और वो बेड का पिलो फुल सेडी ओयो लग रहा है। क्या लग रहा है? वो टीवी का ओयो लग रहा है। अरे अरे. आई थिंक कैमरा मेक्स ऑल द डिफरेंस. कोई बात नहीं. आई एम इन पर्थ गाइस, in Western Australia. This is far, far away. Took a 5 hour flight to get here from Brisbane and met some very old friends today who also know about Jamie. So, आपके चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं चीज केक के भी. अरे ये कहाँ से हो रहे हैं? ये सारा ऑस्ट्रेलिया में कहाँ वायरल हो रहा है? इंडिया में तो हुआ नहीं। मुझे डीएम आ रहा है कि ये मीम जेमी को दिखाओ, ये चीज केक जेमी को बताओ. I think भाई time भाई has साहब। come. We cannot continue with just a borrowed name like Jamie. We should have a name of our own. तो क्या बताओ क्या जिग्नेश स्टेज रखोगे नेम? क्या? हाँ, जिग्नेश. काफी लोग आ चुके हैं चैट में. प्रणाम प्रणाम सब लोगों को. गुरु जी बैठे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. और विद इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो दिस प्लेस इज वेरी फार. So I have come here against all advice to do a show here tomorrow, which is for 23rd, Saturday. तो अगर आपके कोई भूले भटके दोस्त हो यहाँ पे तो बताइएगा. उनको पर्थ में शो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. और अगले हफ्ते शो करेंगे मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में. There's gonna be a 3 day run of my special guilty bystander, and I'm really looking forward to it because this entire trip that I'm on, this entire pilgrimage, is so that I can perform at the end in the Melbourne International Comedy Festival, which is the biggest comedy festival in the world actually. And then after that, I'll do a show in Singapore on the 9th, which is a Tuesday, at Comedy Masala, which is a very long running show, a line-up show that happens every Tuesday in Singapore. I'll be headlining that. So if you are in any one of these cities, Perth tomorrow or Melbourne next week or Singapore after that, then we shall meet. Otherwise, उसके बाद हम इंडिया में आ ही रहे हैं इलेक्शन देखने के लिए. इलेक्शन इज a handicap मैच राइट नाउ. आई थिंक अब बस नाम के ही हो रहे हैं. तो हम थोड़े इससे दूर हैं न्यूज साइकिल से. और फिर भी खबरें आती हैं दूर दूर से क्योंकि इतना कुछ हो रहा है इंडिया में. तो आई थॉट लाइव करते हैं. पर्थ इतना दूर है ऑस्ट्रेलिया में भी कि ये टाइम जोन वाइज थोड़ा नजदीक है इंडिया से. इनफैक्ट लोग कहते हैं बाली बहुत पास में है यहाँ से. इतना पास में है कि हर घंटे एक शिवनरी निकलती है यहाँ से वहां पहुंचने के लिए. Let's acknowledge some of our Satsangis who have joined so far. I can see the usual suspects are here. Ane is here. Irfan Ahmad Saab is here. Kaushal is here. Kaushal व्यास भी CFBR लिख रहे हैं. क्या बात है. जैद साहब is here. किरण ने लिखा है गुरुजी सादर प्रणाम फ्रॉम लास्ट बेस्टन ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना इन इंडिया. क्या लिखा है इस. अच्छा, ऑफ कोर्स केरला. आईपीएल शुरू हो चुका है. देश का युवा अब क्रिकेट और सट्टे में बिजी हो चुका है. अरे अरे अरे. फक. आई मस्ट टेल यू, आई डोंट मिस एनी ऑफ दिस. आई मिस कांदिवली दो. अरे आप भूख रहे हो। ओके. मोहम्मद इज हियर. साहिल Sakordekar is here saying, Guruji,
वोट डालने देश वापस आ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए आखिर तो आना ही पड़ेगा, कितनी देर भागेंगे हम, ये काफी लंबा ट्रिप है, 50 दिन का ट्रिप है और 5 महीने का ही लग रहा है मुझे तो। पर आएंगे वापस और अप्रैल में ही हम टूर शुरू कर देंगे इंडिया का। I'll do the major cities first, of course. I'll do Mumbai, I'll do Pune, I'll do Ahmedabad, I'll do Hyderabad, I'll do Bangalore and maybe Delhi. उसके आगे कुछ प्लान नहीं है, तो उसकी भी लिंक आएगी जल्दी। अ, और कौन जुड़ा है स्ट्रीम में? बिफोर वी प्रोसीड गाइस, यू नो द ड्रिल। CFBR के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग, और लाइक कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा स्ट्रीम को, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके। मैंने मोस्टली तो स्ट्रिक कायम रखी है इस ट्रिप पे भी, ऑल्दो द टाइम जोन्स हैव बीन वेरी डिफरेंट, and I know because of the time not everybody can join in, but I think today is prime time at least back home in India. यहाँ पे तो रात हो चुकी है कब की। मैंने देखा बाहर देश में लोग जल्दी सो जाते, हम लोग ही निशाचर हैं, हम लोग जागते रहते हैं पूरी रात। बाकी यहाँ पे सब लोग जैन स्टैंडर्ड टाइम पे ही काम करते हैं, तो रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद ही हो जाते हैं, तो यहाँ पे काफी लेट है। बट आई थॉट आई जस्ट log in and say hi to everybody. Abhishek Singh is here from Marseille, France. क्या बात है, never missed your witty humor, धन्यवाद। ऑथेंटिक क्या है, बोले सर पर में भी 500 का रूम ले लिए? कहा नहीं भाई, मिलता ही नहीं है। यहाँ सबसे सस्ते में हॉस्टल्स है यहाँ पे, बट इवन दैट कन्वर्ट्स टू करेंसी अपना इतना पीछे है, वो भी 2-3 हजार कम से कम हो जाता है, 3-4 हजार। तो महंगाई है वैसे तो। किरण इज सेइंग मोनिका नाम के जो महिला का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वो जेमी की महिला मित्र है क्या? अरे ये क्या हो रहा है सर? महिला नो मित्र। महिला मित्र, क्या है ये? You have no महिला मित्र now. You don't believe in it आई डोंट anymore. बिलीव इन मित्रता विद महिला। So what do you believe in? Like direct शादी ऐसा? डायरेक्ट शादी की अभी थोड़ा बिलीफ निकल गया है हमारा। हम थोड़ा क्या निकल गया? बिलीफ निकल गया अभी हमारा, थोड़ा डायरेक्ट शादी में। तो बिलीफ निकल गया? अच्छा, ये तो तुम्हारा वीकली बिलीफ सिस्टम चेंज होता है ना, अभी तुम तो यंग हो, तुम कर सकते हो ये सब। इस वीक का क्या बिलीव है बताओ, ट्रू लव है कि नहीं इस वीक में? इस इस वीक में कल तक नहीं था, आज शायद वापस आ रहा है। तो अच्छा अच्छा। दिस इज लाइक वो जो दूध का भाव चेंज होता है ना, रोज लिखते हैं बार बोर्ड पे, आज का भाव इतना है। अरे कल या देखो एक हाँ, बंदी, हम टॉपिक, हाँ, दो लोगों से बात हो रही थी, तो बोलती है कि जो रोगन पीछी पीछी थी। मैं बोला जो रोगन क्या? पीछी क्यों? नहीं तो क्या जो क्या? रोगन पसंद है। आई डिडंट गेट इट, लाइक द गर्ल सेड व्हाट, जो रोगन व्हाट? जो रोगन इज छी गंदा, हानिकारक कहते हैं इसके लिए ऐसा। हाँ अच्छा। तो मैंने बोला कि जो रोगन खराब है, तो बोलती है अरे देखो पता नहीं क्या, जो रोगन तो बियर बॉयफ्रेंड ऑफ अमेरिका। बोला अरे उफ, अरे रे रे रे, अरे अरे रे रे रे, बियर भाई से जो लोगों ऑफ इंडिया बोलने में भी तकलीफ लगता था, अभी ये सुन के तो और। बट अभी उस चोदू को मिल गया अवार्ड भी प्रधानमंत्री के हाथों ही, तो अभी आप क्या ही बोल सकते हो। यू अरे आर वो लिविंग मेरा इन। उस पर भी पूछ रहा है ये क्या हाँ यति मेरे जिंदगी पे आई थी। हाँ, मूड हो रहा है आपके साथ पॉडकास्ट, एक बोला ना उसने। मोदी जी यस। ने भी रिप्लाई तो सही दिया उसको। मोदी जी प्राच डजंट होल्ड बैक। प्राची सिंह, यू आर साउंडिंग टू टायर्ड, पूरी अंडरस्टैंडेबल, प्लीज रेस्ट, वी शैल वेट फॉर योर रिटर्न। अरे अरे अरे, टायर्ड तो है हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है करने और देखने के लिए, ट्रैवलिंग बहुत हो रहा है, तो the time zones keep shifting, obviously that sort of takes a toll. But then the thing is, when will you be back here again? The answer is never. So then you have to power through it. किरण is saying, जेमी अपने महिला मित्र के साथ घाटकोपर का सस्ता बार में बैठा है। क्या क्या लिखा है? रंगारंग कार्यक्रम में स्टील के ग्लास में लिटल लिटल ले रहे हैं। अरे
देखिए स्टील का ग्लास में तो नहीं मिलता है, यानी सस्ते बार में भी कांच में ही मिलता है मुझे। आपको पता है हमारे कॉलेज के दिनों में बच्चे लोग का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ प्लास्टिक का गिलास आ नहीं रहा है, ठीक है, स्टील का गिलास हाँ होटल में फ्री में पड़ा है, कैंटीन वाला दे रहा है लेके जा, लेकिन इतना टचन में करना है युवा को कि नहीं नहीं दारू स्टील के गिलास में नहीं चीजें रखती है, हमको हाँ। काट के गिलास में पीना है। तो इस चक्कर में प्रिंसिपल का ऑफिस से चुरा रहे क्लास का गिलास, क्या क्या चल रहा है युवा युवा। हाँ, युवा, देश का युवा यही है। पर कितना गरीब है यार ये देश। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू सम स्टैंड अप स्पॉट्स इन द जनरल shows here in Australia in their open mics, and you can't cut ice with this audience unless you're living their life really, because वो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है वो इनको समझता ही नहीं है। Like, so first time I get up on stage and I talk about the AQI being so low in their country, and they don't know what AQI is, and their AQI is in single digits even in the major metros. Imagine what a different world than what we are living in. So they have first world problems at best. No? तो वो थोड़ा समझना मुश्किल है, पर आप समझ जाओगे भी, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, तो आप उस पर बात कैसे करोगे? बट खैर, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस ट्रिप, टू try to get through to an international audience and just to see for yourself if your brand of humor converts or not. I must report to you that thus far I feel that my brand of humor is very Indian despite the English. And that's all as well, because the country you belong to and the country where you perform the most, you should represent that. But at the same time, you also want to eventually get through to a universal human experience. So let's see how that pans out. साहिल इज सेइंग किरण दैट अंडरस्टैंडेबल, फिर भी एक माइक तो ले उधर पे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द चैट। अरे इधर मेरी मेरी मार रहे बच्चे लोग, ये अच्छा अच्छा। ये शीला बार में बैठा है, इसके पास एक ढंग का बाइक नहीं है, ऐसा होता है। माइक था वो तो है, मुझे भी समझने में तकलीफ हो रहा है, बट अरे इधर इलेक्टर। हाँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिकॉज डेवलपिंग कंट्री। यस यस, विकास विकास एवरीवेयर, विकास ऑफ योर एस। 78 people have joined in now, but only 40 people have liked the stream. Please do so that we can proceed with the satsang of today. Uh, अतुल सिंह, इलेक्टोरल बॉन्ड सब तो होता रहेगा, व्हाई यू गाइस नॉट वाचिंग आईपीएल, जो ऐप इज फ्री, अंबानी जी के कृपा। या अंबानी मुफ्त ने में फ्री कर दिया ना आईपीएल, आपको पता है? सिंस लास्ट ईयर, नो? हाँ सिंस लास्ट ईयर, आई हॉटस्टार का थिंक लगा दैट इज दिस इज द बिगेस्ट हेल्प टू द गवर्नमेंट कि नशे फ्री कर दो। सबसे बड़ा नशा मुफ्त कर दो, फिर पब्लिक क्या ही कर लेगा। Already people are saying, SM is saying it is hard to hear you, Jignesh. हु इज पुनीत पानिया ऑफ अदर कंट्रीज? मनीष यार पता नहीं, मैं पता है इतना फॉलो नहीं करता अब्रॉड का स्टैंड अप। ऑफ कोर्स द बिग वंस यू नो, but then the big ones are the ones who made it somehow to mainstream. I'm sure there are a lot of great comics who you don't know about, who you will never know about, no? So they must be the Punit Panias of their own country, and it's okay. I guess that's the way the market works. सुहेल खान, अरे अपना सुहेल है क्या? क्या बोल रहे हैं? जेमी सिंह, हमारे कॉलेज के दिनों में लाइक इट वाज 1978। Oh man, that's funny. Uh, what do you think of Amit Shah say electoral bond legalize the election money? यार ये तो अभी कहने की, when you have nothing left to do, you just lie through your teeth. That's all he's doing. अभी तो is out in the open, and anyway everybody knows what is happening. ये सिर्फ ये है कि एक दिखावे की बात होती है, टू मेंटेन अपीयरेंसेस, नो? तो वो भी उनका जो आखिरी था स्मोक स्क्रीन, वो घिर चुका है, फर्क तो नहीं पड़ता उनके फॉलोवर्स को। Imagine how backwards in time we are going as a country. That 10 years back, rape was an issue nationally, corruption was an issue nationally. Now, neither of those things matters. So, is this progress or is this the opposite of it? And even when the opposition leaders go to jail for it,
देयर सपोर्टर्स डोंट सेलिब्रेट की करप्शन को हमने हटाया, उनको पता है क्या हो रहा है, दे आर हैप्पी कि हमारा आदमी जीत रहा है। तो ये तो एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट बन के रह गया, अब इट इज एक रेसलिंग ओनली, यू नो इट इज फेक बट यू वांट योर गाय टू विन। ऑथेंटिक गाय सेइंग सर औरी के साथ ओल्ड मॉन्क ले रहे हो क्या, अरे रे ये किसका नाम ले लिया ये। छी 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 छी। ये औरी वही है ना जो एक पोकेमोन टाइप कैरेक्टर है जो सब जगह पे आता है, वही हाँ, वही है। वही है ना। It's so unreal. Like some of these things, really, you see and you think, is it really happening? Are we in the matrix or what? Arvind Kejriwal arrested. Rick is saying, "अब क्या तुम्हें पता है जेमी कि ये हो चुका है आज?" क्या केजरीवाल अरेस्ट हो चुका है? Yeah, क्यों? first time in the history of India, a sitting chief minister has been arrested. एक लिकर रिलेटेड केस चल रहा है 2 साल से, जो जिसमें आपके और जो टॉप लीडर्स को भी ऑलरेडी पकड़ा है और वो जेल में ही, उनको बेल नहीं मिल रही है, नाउ दे अरेस्टेड हिम आल्सो। He is the biggest, one of the biggest, but maybe one of the biggest for sure leaders of the opposition. And in Delhi, although they did not win in Lok Sabha last time, but in Rajya Sabha they got almost all the seats. So they've taken a big guy out, no, from campaigning. तो अभी क्या केस चलता रहेगा, तारीख पड़ती रहेगी और इलेक्शन का सीजन निकल जाएगा तो बंदा कैंपेन नहीं कर पाएगा। प्लस ये हो गया ना कि एक बार धब्बा लग गया कि गया आदमी जेल में, तो जो पार्टी हाँ। एंटी करप्शन के प्लेटफॉर्म पे ही निकल के आई थी, उसका ही अगर चीफ मिनिस्टर जेल में डाल दे एक बार, वही ना, कैसे भी अगर एक बार डाल दो जेल में फिर देखी जाएगी आगे। तो एक बार उसका वो रिकॉर्ड खराब कर दो आदमी का। So they were applying this for months actually. Finally, maybe there was some hurdle legally which they have now cleared, and it is huge news. In fact, ये इसको आप एक तरीके से इमरजेंसी ही बोल सकते हो। और वैसे तो जीतने ही वाले हैं, बट it's hard to tell whether they are still paranoid कि let's not leave any stone unturned, or they just want to destroy the opposition so completely that nobody will even try in the future to oppose. Oppose तो क्या है, ये just even slightest difference of opinion not tolerated anymore, which is why I thought of talking on the electoral bonds. Did not make it to the news in prime time as expected, but that is a huge, I would say, you can't even call it news anymore. But I think it's still a big win for people who are fighting the big fight. किरण बोल रहे आईपीएल इलेक्शंस में ज्यादा फर्क नहीं रहा, ओनर लोग सेम ही है, बाकी ग्लैमर और तमाशा। अरे मैं सुना ये मुनावर नाचा आईपीएल के सेरेमनी में, ऐसा वैसा। हाँ, हाँ, not even इसलिए तो। surprising anymore now. Munawar is legit celebrity. You know कि this guy कौन है वो हरियाणवी यूट्यूबर अरे जो वो गुंडा है, एल्विस ऐसे बहुत एल्विस। होंगे बट हाँ, एल्विश, एल्विश हैज लाइक ही हग्ड मुनावर और समथिंग, तो उस तो राइट विंग वाले भड़क गए उस पे, उसको सॉरी बोलना पड़ा। ओ। या तो by the way, JB, this is like a rhetorical question, but do you know what electoral? हेलो हेलो। Okay, yeah, हाँ हाँ, पता I है, अभी आप ही पता पे है। आया था उस दिन। हाँ, तो बताओ क्या होता है। अरे क्या बोलते हैं, बीजेपी को पैसा देने का टैक्स फ्री लीगल तरीका ना। हाँ, डोनेशन। हाँ यानी पॉलिटिकल चीज केक। हाँ। तो the thing is that एक तो वो सुप्रीम कोर्ट stuck it down so hard it's not gonna come back. Other thing is that it demanded SBI to furnish all the details. They've asked for 4 months saying कि impossible काम है, VLOOKUP में हमारा अटक रहा है लैपटॉप, तो दे सेड नहीं परसों चाहिए और फिर देना पड़ा। तो इमेजिन लाइक हाउ मच फेस यू लॉस्ट एज द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री कि आपने झूठ बोला ना क्लियरली कि 4 महीना लगेगा। प्लस उसमें एक सीक्रेट नंबर भी था जो सिर्फ यूवी लाइट में दिखता था। इमेजिन क्या क्या हो रहा है। दिस इज क्या? लाइक या दिस सीक्रेट इज लाइक नंबर मतलब क्या?
यानी है शीट में, बट यूवी लाइट मारता है तो ही दिखता है, इन दैट नंबर लिंक्स कि ये एग्जैक्टली किस पार्टी को दिया है, या ना, लाइक अ यूनिक नंबर फॉर वी लुकअप। ओ, वो जेम्स बॉन्ड चल रहा है। हाँ, फुल फुल बॉर्न आइडेंटिटी। और साला इतना चोरी भेजे कि उसमें कितने मल्टीपल एंट्रीज में नाम लिखा है, सिर्फ मोनिका लिखा है, उसका सरनेम भी नहीं है उसका। हैं? आप लोग इतना केवाईसी दे रहे हो इधर एक झाटू अकाउंट खोलने के लिए, इधर कोई मोनिका नाम की बंदी करोड़ों रुपए देके एक सरकार को, पता नहीं कौन थी नहीं थी। There are companies that are shut down years ago, no, which are officially they are not existing, but they're still donating from beyond the grave. इतना मैजिकल स्कीम। तो तो फॉर ऑल द पीपल हु कीप सेइंग कि स्कैम तो नहीं हो रहे, स्कैम हो रहे, अभी सिर्फ रिपोर्ट नहीं हो रहे ना, बाकी तो स्कैम के बिना थोड़ी ये देश चल सकता है। इससे बड़ा और स्कैम क्या चाहिए। Rick Clicks is saying so many such things have been happening in the past few months that indicate democracy taking a plunge. Congress's account banned, Ladakh protests, Jharkhand CM arrest, bonds, etc. There is any hope? I don't know. But the thing is, now if you take this case in itself, no electoral bonds case, somebody filed a PIL years ago, somebody did the research, somebody kept following up. Finally, the case went through, and the government was forced to reveal all of this. So that means there is still hope. Prashant Bhushan was taking the lead in this, but of course, he had a team of activists and other lawyers helping him out. So is that not hope? कि कोई तो कर रहा है, somebody is still fighting the good fight despite everything. लद्दाख में वांगचुक कर रहे हैं क्लाइमेट फास्ट, आज शायद 11वां या 12वां दिन है, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो वो बैठे हैं सत्याग्रह पे। ही वांट्स स्टेटहुड फॉर लद्दाख। ही सेइंग यूनियन टेरिटरी के नाम पे लोग सब पहाड़ बेच रहे हैं हमारे, which is not even surprising anymore, but somebody is doing it, no? Now you may question his motives, his past, ये वो, but आपको चाहिए कि संत आदमी आके पॉलिटिकली लड़े, तो वो कभी होने नहीं वाला है। इन स्पीकिंग ऑफ संत आदमी, सदगुरु का एक कुछ ऑपरेशन हुआ मैंने सुना, डू यू नो जेमी? क्या सतगुरु का ऑपरेशन हुआ? Yeah, he had a bleed in his brain, which is very dangerous. But he refused to go to the doctors, no, because he's a workaholic. They operated. एक कोई वीडियो आ रहा है ऑफ उसके द डॉक्टर। उसके ब्रेन ने भी गिव अप कर दिया क्या थॉट्स सुनने के लिए उसके? नहीं नहीं, ये सब नहीं बोल सकते ना, दिस अच्छा, इज अच्छा, या दिस या इस क्रिटिकल कंडीशन, सो अच्छा, अच्छा, अच्छा। बट उसका एक वीडियो ऑलरेडी आ रहा है ना, इज गॉट दिस पैच because they drilled through his cranium, ना, it's a major surgery। उसमें भी बोल रहा है the neurosurgeons they drilled through my brain and they tried to find something but they could not find anything। ये कर रहे हैं, क्या आदमी है यार ये। अरे! सर सर किरण से सदगुरु वर्कोहॉलिक काम क्या करते हैं, काम इवेंट्स का काम ना किरण, आपको पता तो है, सबसे बड़ा काम इवेंट्स का काम है ये देश में, इवेंट मैनेजमेंट। वो देयर अब इज एवरी लोगन पे आ गया उसके बाद तो खत्म ना सतगुरु क्या है। अरे द हाइट ऑफ सक्सेस। लेजिट लेजिट बन गया सतगुरु He, एकदम। he, he came to all the late night shows also in the US, and the cause he took was great to save the soil campaign. If you had to take one sort of message across the world, then it's a great message to pick what he did. But और प्लीज लेक्स वो बाइक, लेक्स ने नहीं लिया ना लेकिन उसको, हाँ, लेक्स ने नहीं लिया ना उसको आने के लिए उसके पॉडकास्ट में। लेग्स पे पता नहीं गया होगा कि नहीं, पता नहीं अपने को, मे बी लेग्स वाज नॉट दैट बिग येट इन दोस टाइम्स, दिस वाज मोर देन अ ईयर ठीक बैक, ठाक नो, था। या मोर देन, या 2 years maybe, yeah। Simon saying Sadhguru said the doctor opened the skull and did not find anything। Actually, that is exactly what he said, but it's the 17th day of Wangchuk's fast. My God, I think this is very scary because कोई ध्यान देता नहीं वैसे भी लद्दाख पे, और अभी भी लग नहीं रहा, ना कहीं न्यूज में आ रहा है, ये मुश्किल होने वाला है। Kshitij is saying science started where spirituality stopped। नहीं श्री, ऐसा थोड़ी है, स्पिरिचुअलिटी से डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर, एज यू नो, डिमेंशन की बात होती है ना इसमें तो। अरे! क्रेजी मशीन इज सेइंग हमारा वासुदेव कुटुंबस्की में गुजरात में ताजिकिस्तान और श्रीलंका के मुस्लिम को कुछ कूट रहे हैं।
Uh, are there any अरे questions or should we move ahead? वो भी हो गया ना अभी वो एनआरसी भी लगवा दिया ना मोदी जी ने। लगवा नहीं, जब नोटिफाई किया, अभी कब वो लॉ बनेगा ठीक से वो सब पता नहीं. दिस probably it was just to distract people from the whole electoral bond thing. और इफ यू नोटिस इतना प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, इस बार कुछ नहीं हुआ एनआरसी. हाँ पर क्या एनआरसी इज डायबोलिकल व्हेन यू क्लब इट विद सीए, तो वो तो अभी हुआ नहीं है ना, सिर्फ एनआरसी डाल दिया है. और एनआरसी भी सिर्फ नोटिफाई किया है, अभी तक टाइम है. जैसे अभी नया पिनल कोड आया है कुछ, जो नो दे रिप्लेस्ड आईपीसी विद कुछ था ना, भारतीय न्याय संहिता ऐसा कुछ, तो अच्छा वो कर दिया. चेस्ट थम्पिंग सब हो गया, बट देन ग्राउंड तक पहुंचने में इट माइट टेक years if not a lot of months, because एफआईआर रीजनल लैंग्वेज में होता है हर देश, उसमें उसको प्रिंट करना पड़ेगा, सिस्टम चाहिए डालने के लिए. पुराना सिस्टम नया से लिंक कैसा करेगा? जो जिसका बहुत केस चल रहा है, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है, हाँ हिस्ट्री चार्जशीटर्स, उनका क्या करेगा? तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर बिफोर इट कम्स ऑन द ग्राउंड. बट अगेन विद दिस गवर्नमेंट, यू नेवर, they will just wing it. हम्म। अरे और एक Yeah. अपना पैसा डूब रहा है स्टॉक मार्केट में, बच्चे लोग का सब नाराज हो गए। वो पता किस, नहीं क्या किस है। अच्छा, पूरा मार्केट डूब रहा है क्या? हाँ मतलब डूब नहीं रहा है बट बहुत नीचे चले गया तो सब बहुत नाराज नीचे हो चला गया? अरे ये तो मार्केट का नेचर है, अप एंड डाउन चलता रहता है. ये पहली बार थोड़ी हुआ है. You have to buy the blue chips and just stop checking every day. That's the way to do it. Uh, केजरीवाल अरेस्ट पे कौन है? वी वी इज सेइंग मनीष सिसोदिया अरेस्ट, कांग्रेस अकाउंट फ्रीज. ये कैसा इलेक्शन है? ये इलेक्शन ही नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर शो. अरे बट इनको पता है कि इतना जीतने वाले, फिर भी कितना प्रिकॉशन मेजरमेंट। या यानी एक्चुअली इस आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम देम, नो, लीव नो स्टोन हाँ अनटर्न. हाँ एकदम आसान, नो रिक्स, जीरो रिक्स। प्राची सिंह, जिमी वी कांट हियर यू, वॉल्यूम इज टू लो. क्या हो रहा है जिमी आज? अरे आज ठीक है ठीक है ठीक है। सुहेल इज सेइंग मार्केट नीचे नहीं गया, आप ऊपर जा रहे हो, निर्मला से. अरे अरे अरे। साहिल इज सेइंग मेरा फ्रीज हो रहा है क्या स्ट्रीम, पता नहीं. थोड़ा हुआ था बीच में आपका। अच्छा, अभी ठीक है. हाँ हाँ अभी ठीक है। ओके. कितने लोग हैं अभी? 100 लोग के पास पास है। Okay. Do like the stream, guys, if you haven't so far. This is gonna be one of the last streams I do from abroad. Then once I'm back home in familiar territory on solid ground, I shall sort of stick to a date and a time, and we'll be more regular with this shit. Sujit is saying you're our Sadguru. Someone अरे told me अरे I laugh like Sadhguru, so now that's stuck in my mind. अरे अरे। Kiran is saying very youth Congress students, they be on the streets. I think there is no youth Congress left. Youth and Congress are two opposite things. Modi ji learned from Bangladeshi sister Sheikh Hasina. Yeah, oh yeah, absolutely. Uh, Kiran, I am very disappointed with Congress. They still have a very good presence on the ground in the streets like Kerala, Karnataka. Well, yeah, but it's a decaying organization. You can see it at all levels. And even if they muster the will and the plans to fight, they don't have the funds to fight with. So, but fun fact to note is that when the electoral bonds did become a law, I still remember finance bill was being passed. उसमें ये लोग सुमड़ी में घुसा दिया इसको, and nobody opposed, not even a chew from anybody in the opposition. It means everybody wanted it. No? This was one of the bills that got passed in record time. Uh,
Online show बनता है once you're back home side. Oh yeah, so good you reminded me. We had an online show this Sunday, but yeah, I'm not able to keep up with the schedule. There's too much traveling happening, so we're shifting it to the 14th. ना जेमी कभी है हाँ हाँ 14th को है। 14th we'll do guilty bystander online on Zoom. A few people who had bought the tickets, we would have notified you right by now. हाँ हाँ ईमेल चला गया। Yeah. Yeah, you can join on that date. If you can't, you can take your money back also, no problem. Maybe join in at some other time. We do intend to do one online show a month from here on in. Uh, any other questions, or shall we call it this a day? वही देख रहा हूँ। 100 people watching. If you haven't liked the stream so far, please do so now. This stream is coming to you from far, far away from Western Australia. It's the biggest state in Australia. I heard today that if you start driving from Perth, the capital, right now, it'll take you 2.5 days to reach the northern end of the state. That's how big it is. I went to the art gallery and the museum like I usually do, and even in India, I like doing it. Abroad is even better because obviously the museums are kept better, and there's so much to see in India also, and we have some great museums. But here you can see the amount of respect being taken in the display and all the artifacts that are there. Also, उधर है क्या the ऐसा कुछ मोनालिसा जैसा है कुछ उधर? मोनालिसा कहाँ से आ गया भाई? मतलब मोनालिसा जैसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, मोनालिसा सिंगुलरली ग्रेट पीस ऑफ आर्ट, वो तो नहीं है यहाँ पे. लोकल आर्टिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, लाइक जस्ट इफ यू टॉक अबाउट पेंटिंग एंड ऑल, बट नॉट एज मेनी, लाइक इन आर्ट यूरोप एंड यूएस सेट ट्रेंड्स स्टिल टुडे. So also the point of these museums and the galleries is that you promote the local artists. Now their work gets showcased in other countries, and it takes time because culturally, although they are a colony and they're sort of, they have a British connection, a big one, but culture is very different from what the Western European and the American countries are like. So Zaid is saying, I was reading Slaves Incorporated today, Guruji, even back in 2011. You were so deep. One of the lines he's quoted from the blog is, the greatest lies are always the ones you tell yourself. In fact, a friend I met here today were talking about Slave Singh and that he used to read it back in the day. Because even he had started his job around the same time, a guy my age. And Slave Singh, if it's still there, I don't even know where it's there online now. मैं देखा नहीं खुद बहुत टाइम से. जहर लिंक होगा तो आप भेज दीजिएगा यहाँ पे. There are many vlogs all around work, corporate life, and your personal journey along the way. And it was devoid of any Indian references or words. So it did have a fair bit of following from outside India as well. But that kept going while I was in employment, and maybe it helped me through my journey through corporate life because there's sort of catharsis to write that every week. But once I was out of it, I didn't feel like it. A lot of my friends and colleagues would give me topics like the suggestions for the blog, because they are going through their own shit in their own offices, and there was never a dearth of ideas. But once I was out of it, it didn't feel genuine to keep talking about it because life is so different when you're doing your own thing as a freelancer. Like uh, you do come across corporates who are your clients and that sort of bullshit, but that's uh, very different from being an employee and being in the system with an iCard around your neck. As एंटी शोधे सिंह ऑस्ट्रेलिया से भाभी लेके आओ, कस्टम्स में क्लियर है. टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये कोई सुवर्णिया थोड़ी है. अटा जाएगा कस्टम्स में, कुत्ता सूंघेगा आके बैग मेरे, लग रहा है भाभी है अंदर, निकाल. अरे अपने अपने आशिक नहीं आए आज. साहिल भाई. हाँ साहिल भाई नहीं आए. अरे आपको भाभी से साहिल भाई क्यों याद आ गया?
नहीं, क्योंकि the friends I met here, no, they also follow my work and the live, and they were asking about Sahil also. अच्छा तो अच्छा। इतना इतना सपोर्ट है ग्रास रूट लेवल पे साहिल भाई के। अरे Kunal Sai saying we will see you, Sarah says anytime soon. Loved you on the podcast. Your contest size energy well, and oh yeah. Not sure. I mean, we hope that it'll be back, but we have no visibility on that. Cyrus and I share a good chemistry because, you know, like you said, the high energy and the Guruji energy is very different. And Cyrus, very difficult to work with him for a lot of people. I remember back in the day when Cyrus says was new as a podcast, even Biswa got pissed कि मेरे को बात ही नहीं करने दे रहा है, and Biswa and Biswa is one of the loudest people out there in comedy. But then me and Cyrus, we work well together, and there's also a Xavier's connection. I guess there is some mutual respect there. कांगारू दिखा कि नहीं? हाँ दिखा यार, यहाँ पे तो घूमते ना, कुत्तों की तरह घूमते हैं यहाँ वहाँ पे ऐसे, पर वो प्लास्टिक नहीं खाते, ये बात है। अनलाइक no, our कटहल। revered unlike our revered mammals in back अच्छा home in India, yeah. अरे सुवन्या वहां पे शॉप में, हाँ, वो सब नहीं होता क्या, टॉयलेट से सांप वाप निकला है, ऐसा सांप बड़ा बड़ा मकड़ी है। वो मे बी इंटीरियर्स में होता है। मैं तो सब शहरों में घूम रहा हूँ ना, यहाँ पे सांप वाप भी बहुत हैं, पॉइजनस लोग बोलते हैं, पर मैं देखा नहीं अभी तक ऐसा वाइल्ड वाइल्ड में कुछ। अच्छा अच्छा जेलीफिश दिखा अभी, होटल के सामने ही रिवर है पर्थ का, और अच्छा। ऐसा जेलीफिश ऐसे ही घूम रहा है मजे में पूरे में। आई हर्ड कि डॉल्फिन लोग भी आता है, हमको तो दर्शन नसीब नहीं अरे हुए आज, पर ऐसा शहर के अंदर डॉल्फिन में। मेरे को डॉल्फिन के बारे में सिर्फ ये पता है कि डॉल्फिन लोग आपका रेप कर सकते हैं। आपका नहीं, पता है कि इंसान का कैसे करेगा? अरे हाँ सच्ची, अरे हाँ सच्ची, दिस इज अ फैक्ट। मैं है क्या कहता, ऐसा? ऐसा अरे हुआ है क्या? हाँ हुआ है। हाँ, हाँ हाँ हुआ है हाँ। कुछ भी। अरे सच्ची। ये सेइंग देयर, अभी वापस ये सब तुम बोलोगे और ये अपना स्ट्रीम हो जाएगा डिमोनेटाइज। हर बार कोई गलत चीज बोलना है स्ट्रीम में। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, होता ही। लिंक भेजो फिर है तो। आप क्या करोगे वो एमएमएस देख के? शिट, एमएमएस है? फिर तो फेक ही है। Can't be really different between a guy wearing a suit of a. Kunal said you also been on the week that wasn't. What is your favorite bit that you got to perform on the show? Kunal is saying. Uh, yeah, that's where my association with Cyrus starts from there. Years ago, when they're looking for comics to come and perform for guest spots on the show, me and a lot of other comics were. In fact, there is one episode, if you can find it, उसमें मैं है, राहुल सुब्रमण्यम है, कनीज है, आकाश नहीं, सोनाली ठक्कर है, एंड उत्सव चक्रवर्ती है। ये सब लोग एक एपिसोड पे साइरस के, आई थिंक सब तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो बात सिर्फ उसमें साइरस कर रहा है ऐसा? हाँ, उसमें बात सिर्फ साइरस ही कर रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, दिस इज द वीक दैट वाज इन द टीवी शो, द न्यूज अच्छा अच्छा फॉर्मेट लेट नाइट कॉमेडी शो दैट साइरस यूज्ड टू डू अच्छा। along with कुणाल। तो हाँ आई थॉट टीवी पे जा रहे हैं पहली बार, इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, we should like go prepared, and I fucking went prepared. They said 2 minutes or something, and I went prepared with my 2 minutes. Like no, I rehearsed the hell out of it. I wrote the hell out of it because TV पे the restriction. Obviously, you can't say a lot of things on TV. You can't even use a brand name on TV, no, because कोई भी आपको sue कर सकता है कि मेरा brand का ऐसा ऐसा क्यों बोला, नाम भी क्यों ले लिया मेरा ऐसा। तो writing for TV very different than doing stand up, of course. तो I went, बाकी सब कॉमिक ऐसे ही मजे में आ गए, just they were just winging it. So mine really stood out from all those people who are there. So they kept calling me back over the years, and I think my hoarding wala jo tha na set, कि every year, no, in all the religious festivals, you can see the local neta, he is rising up on the hierarchy of the hoarding. ना पहले वो ऐसा हाँ। कार्य करता है, फिर
which is part of my, I think, ये इसमें इंटर्न वाले वीडियो में है ये तो but Cyrus still remembers that, and I think it had gone very well overall. So if I had to pick one, that was the one. Samrat Patel saying, Jamie is believe it or not. I went to Gold Coast just a few days back. वहां पे उसके पोस्ट पे ही रिप्लीज बिलीव इट और नॉट था वहां पे जाने का अंदर पर मन नहीं किया था वही सब वो हॉल ऑफ मिरर्स और भूत वूत ये सब छुट्टेगिरी अभी कौन मानता है ये सब चीज में आज का तारीख में वलीद इज सेइंग कांगारू मुंबई ट्रैफिक में बहुत काम आएगा एक लेके आओ गुरु ये कोई वेस्पा का स्कूटर थोड़ी है कि मैं लेके जाऊंगा यहाँ से वैसे जेमी आई यू देयर कैन यू स्टिल हियर मी हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। या सुवेनियर शॉप में एक मेरे को चीज मिला जो लोग बेच रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे तो बॉटल ओपनर है वो हाँ कांगारू के गोटे मिल रहे हैं यहाँ पे है यस है। यस लाइक फॉर रियल लाइक I mean they are not that direct they call it scrotum but अभी you know what हाँ it is अरे, और वो और बॉटल ओपनर है, हाँ ओपनर। हाँ हाँ, जो नीचे ऐसा स्क्रोटम है इसका और ऊपर बॉटल ओपनर है तो क्या, कंगारू के गोटे से बॉटल ओपन कर रही है लोग उधर? हाँ यानी ऊपर वो रखा है ना वो करने का पर नीचे जो लाइक बॉटल ओपनर के नीचे में हाँ और दूसरा था कि हाथ था एक कटा हुआ हाथ कांगारू का ना ऑब्वियसली दे ईट कांगारू मीट ऑल्सो यहाँ पे नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीसीज तो जो भी बॉडी होता है मरा हुआ कैडेवर उसका ये यूज कर रहे हैं तो मैंने ये तो पी माय फ्रेंड कैपिटलिज्म ना। माय फ्रेंड सेड कि दे सेल दिस बिकॉज दिस इज द ओनली सुवेनियर व्हिच यू कैन नॉट मेक इन चाइना सही बात है। Then I asked one of our drivers here was an Aussie कि ये भाई ये जो बिक रहा है is it really a thing here कि ऐसे टूरिस्ट लोग को क्या बना रहे हो तुम लोग तो उसने बोला it's just a tourist thing he said we don't do that sort of shit here said, but the American tourists will believe anything you tell them they will buy all this he said in fact you can tell an American tourist that no we start hunting kangaroos when we reach high school and we hunt them with a boomerang and and the tame ones, no, we keep them as pets so that the kids can hop to school on the kangaroos. American लोग ये भी मान ले. The people here are quite funny. Like this, the random people you meet, the store guys, the cabbies, and just in general, just good humor all around. So, but रेसिज्म अपना होता है क्या? अब नहीं, like I haven't noticed, but again, I'm going to all the tourist places. They're the people who you interact with. This is their job to be nice to you, so you can't tell. वो रेगुलर लाइफ में होता होगा आई एम श्योर यानी बोलते हैं अपने दोस्त बट नोबडी इज लाइक नो हरास्ड और no nobody's life is no is life is changing because of it no it's like it's insidious it's there and you sort of accept it ऐसा no some snide remarks here and there वैसा nothing more than that like they are polite racists no they're not like us Kiran is saying the important question is can we ever evolve from a low trust society to a high trust one correct Kiran I think trust comes with abundance no? When there is no abundance how can there be trust यहाँ पे छोटी मोटी चोरी होती ही नहीं है आप कहाँ पे अपना मोबाइल वोबाइल गिर गया वॉलेट गिर गया जो जाओ वापिस आधे घंटे में पड़ा रहेगा वहीं पे वही उठाएगा नहीं Do you think people can ever achieve work-life balance in India after spending a couple of hours a day while commuting between home and workplace, especially when work from home is almost over? हाँ मुश्किल है so whoever I meet here my friends and friends of friends they have great lives वो 2-3 दिन ही जाते हैं ऑफिस में or even if they live in the suburbs the commute is half an hour at best and it's a comfortable commute the roads are so good that you're driving at 80-100 kilometers आपको फील ही नहीं होता है अब थकावट भी नहीं लगती है
एंड ट्रेन्स एंड सब कनेक्टिविटी जबरदस्त है यहाँ पे, तो अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, सो and maybe it is better than many of the Western countries also, like from whatever little I have seen. So that way, at least in the major cities, they have it sorted. But then again, you go to the suburbs and all, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है बस का, और लोग ही नहीं है तो फिर क्या करेगा फ्रीक्वेंसी रख के ना, ये बात भी तो है। अरे मैं आपने सुना नहीं क्या, बैंगलोर में आजकल पानी नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करो। तो उससे क्या होगा, पानी कैसे कम यूज होगा उसमें? ऑफिस ऑफिस में पानी वेस्ट नहीं होगा ऐसा। तो क्या एम्प्लॉय लोग नहा रहे क्या ऑफिस में आके बेच? पता नहीं। जितनी बार मुतेगा वहां उतना घर में भी मुतेगा आदमी। साहिल इज सेइंग उल्टा घर पे रहेगा तो हिलाएगा ज्यादा, तो ज्यादा पानी जाएगा, जो जो ऑफिस में होपफुली लोग नहीं कर रहे हैं, इन्फोसिस में भी। साहिल इज सेइंग दिस इज द थर्ड टाइम जेमी इज मेंशनिंग सांप एंड टॉयलेट ऑन अ लाइफ। अरे यार ऐसा कभी ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो ऐसा सोच समझ के इसकी। पता है इस वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स पीपल हैव। मैंने एक बार बचपन में देखा था वीडियो की, सांप निकला संडास में से, तो तब से लाइक आई यूज्ड टू कीप लुकिंग बैक, लाइक संडास में देखो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हर जगह नीचे देख रहा हूँ सांप तो नहीं है, बट देन यू जस्ट हैव टू कहा एक कोई पुराना वीडियो इंडोनेशिया का देख के क्यों डरने का ना अभी, तो आपका दिन शुरू नहीं हो रहा विदाउट एंजाइटी वेंचर। Do you okay? Any other questions? I think we are reaching the end of the live, and यहाँ पे like I said already सुबह होने वाली है। अल्पेश बॉय सिंह CFBR धन्यवाद आपको भी CFBR। जतिन लूथरा सिंह वापस होम स्टे जाने के लिए भी क्या क्या लिखा है? वापस होम स्टे जाने के लिए भी कह रहे हैं। समझा। इन्फोसिस TCS में लोग हिला नहीं रह सकते, टीम्स में कॉल आ जाते हैं। अरे अरे अरे। अरे म्यूट दबाने का ना, लाइक यू नाउ यू शुड बी एन एक्सपर्ट एट व्हेन टू म्यूट एंड अनम्यूट। नहीं हाउ नहीं, फिर डिड वो यू डिस्टर्बेंस हो गया ना, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। how did you find Australia and New Zealand? New Zealand is natural beauty. Australia is urban diet. Yeah, I mean, if you had to put it that way, sure. New Zealand, Australia में भी बहुत है, like if you with thing with natural beauty, you can't compare. India में कितना सारा है ना, but the fact is that they maintain all of it here is all green, is clean, is pristine. Like the waters are so clean. शहर के बीचों बीच डॉल्फिन आ रहा है और क्या चाहिए? इनफैक्ट सिडनी हार्बर विच इज द वन ऑफ द बिजिएस्ट हार्बर्स इन द वर्ल्ड, वहां पे भी है काफी वाइल्ड लाइफ है, लाइक देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ सी लाइफ दैट यू कैन सी एंड यू कैन स्पॉट। एंड थोड़ा फर्दर इफ यू गो देयर इज एन आइलैंड जहाँ पे पेंगुइन भी आते हैं, आप सोचो। अभी हैं। या अभी मुंबई में ऐसा होता है पेंगुइन अब तक काला हो चुका होता था गटर का पानी में, तो इट्स एंड द बीचेस व्हिच आर देयर इन द मेजर सिटीज, उसका पानी इतना क्लियर है, 6 फीट तक तो दिख रहा है साफ साफ आपको आर पार। एंड आई जस्ट वंडर दैट व्हाट द फक डू दे डू विद द सीवेज, कुछ तो करते होंगे ना, कहाँ जा रहा है सीवेज? समवन टोल्ड मी कि पूरा इट गेट्स रिसाइकल्ड एंड तो दे हैव डिफरेंट पाइप्स, तो जो अपना संडास का पाइप है ना उसमें रिसाइकल पानी आता है, तो which makes sense ना, we can't flush down like fresh water in today's world. Maybe this is a time for innovation। इतना टेक ब्रो बैठा है जो बैंगलोर में, बनाओ कोई आइडिया, तन्मय को बोलो कोई आइडिया बनाएगा बैंगलोर का पानी। बोलो एक और ऐड कर दो क्रेड का पानी, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Shekhar is saying past 10 years many opposition leaders activists got arrested but not Rahul Gandhi and Owaisi. Any thoughts? Well, ओवैसी का तो आई एम increasingly convinced कि वो बी टीम है, उनको the both the parties they get their huge benefits by keeping the fight going. Rahul Gandhi का पता नहीं, I mean they did try to strip him of the which that was a proper case and in fact जो केस में उसका पार्लियामेंट्री सीट गया था that was criminal offense था ना वो, तो बिकॉज वो उसको 2 years से ज्यादा का कुछ सजा दिया था उसने, तो
जो भी था वो जज गुजरात का रैंडम। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग, बट द थिंग इज दैट no matter how much fun they make of Rahul Gandhi, he's still the biggest leader in the opposition. If you had to pick a big leader, it would be him in the opposition, for better or for worse. So if they directly go out, I mean, put him in jail, I think it looks bad. It is in their own interest for Rahul Gandhi to be around, I think. But it OAC, it is very, very dodgy. Jatin is saying, I'm talking about Bangalore water crisis. People are going back to home state for Holi and not planning to come back. चलो अच्छा ही है, good for traffic. टेक ब्रो वेज फ्लीट बनाने में बिजी। अरे अरे अरे, ये तो मैं भूल ही गया वेज था। फ्लीट क्या है? अरे हैव यू सीन द न्यूज़ अबाउट जोमेटो? क्या? जोमेटो का अभी एक प्योर वेज फ्लीट अलग निकलेगा। है? या वो लोग ग्रीन कपड़ा पहन के आएगा एंड दे विल। देखो, जोमेटो का रेट नॉनवेज जस्टिफाई करता है इसलिए। अरे वो उसने सोचा ही नहीं, उसने डायरेक्ट लंबा मेल ट्रेल निकाल दिया बाहर, हाय प्लीज टू शेयर विथ यू, लिंक्डइन पोस्ट डाल दिया भाई ने ट्विटर पे। सब लोग उसी गांड में घुस गए कि ये कैसे कर सकते हो। एंड तो एक तो बात वो है कि इज इट राइट टू सेग्रीगेट और नॉट, चलो वो एक अलग डिबेट है। बट प्लस इफ यू सी प्रैक्टिकली, जो इतना बड़ा ब्रांड बनाया है टेक प्रो ने, तो उसने एक मुंह में ये कर हाँ दिया ना कि उसका रेट था वो नॉनवेज हो गया, और क्लियर, दैट्स हाउ हाँ, यू आइडेंटिफाई ना। तो राइट। पीपल से कि चलो ठीक है, तुम बोलते हो मार्केट में डिमांड है और बहुत लोगों को वेज खाना है और उनको पसंद नहीं है कि वो नॉन वेज के साथ खाना मिक्स हो, ठीक है, तुम एक अलग उसका सेगमेंट बना रहे हो, वो भी ठीक है। प्रॉब्लम इज यू गिव देम ग्रीन कलर, तो दूर से समझता है कि ये प्योर वेज वाला आदमी आ रहा है। तो मनी सोसाइटीज इन इंडिया, यू नो, दे विल बैन नो कि जोमेटो वाला लाल कपड़े वाले को अंदर आने ही मत दो उसको। प्लस पीपल स्टार्ट बिट ऑलरेडी, हाँ, बरोबर। ऑलरेडी डिलीवरी बॉयज मार खा रहे हैं इंडिया में, जिस पे भी उनको डाउट आता है कुछ भी, ये मुस्लिम है ये वो, लोग मार रहे हैं ना भाई। इट इट इट्स फनी हाउ बैकवर्ड वी आर। लोग डिलीवरी बॉय को मार रहे हैं, जो गरीब आदमी को। अरे आपको पता है? अरे तो अब, अरे तो आपको पता है, अभी एक आफ्टर दिस, हाँ। बंदे ने, हाँ, अरे एक बंदे ने ऐसा ऑर्डर किया था, और उसने ऑर्डर पे ऐसा नोट डाला था रेस्टोरेंट को कि आप ये बिल मत दो, और इसके ऊपर लिखना मत कि ये चिकन है, ठीक है, क्योंकि घर हम्म। पे पकड़ा जाएगा वो, और घर पे नहीं खा सकते। तो फिर भी और उसको घर ये, पे, उसको घर पे अगर वो खाना है लाल फिर वाला भी। बंदा हाँ या, अरे वो, so he took back the decision in ये, one day flat after the backlash. No, he took the decision back for at least the green color। तो बोला नहीं, कलर चेंज नहीं करेंगे, पर आपके ऐप पे दिखेगा कि ये प्योर वेज खाना आ रहा है। तो खाना प्योर वेज ही आता है, अगर आप वेज ऑर्डर करो तो वेज आएगा खाना। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को वो है कि, या नो, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को वो चाहिए कि वो जो जो बॉक्स में लेके आ रहा है उसी में नॉन वेज भी ये सब। The thing is, प्रॉब्लम एक्चुअली वो भी नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम ये है, पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद द मुस्लिम गाय डिलीवरिंग द वेज फूड। तो ये भाई ने बोला नहीं ट्विटर पे, बट देन पीपल आर आस्किंग कि डज दिस मीन दैट जो आपका राइडर है वो भी प्योर वेज होना चाहिए? वेयर डज दिस स्टॉप नो, कि वेज आदमी नहीं बनाना चाहिए, हाँ। वेज आदमी नहीं डिलीवर करना चाहिए? तो फिर नेवर एंडिंग, देन पीपल से कि नहीं मेरे गोत्र का आदमी आके डिलीवर करे, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना फिर। पीपल आर कंपेयरिंग टू हलाल फूड, की हलाल भी तो चॉइस है, तो ये चॉइस तो है ना, आप मत खाओ, थोड़ी आपको कोई जबरदस्ती कोई टंगड़ी कबाब खिला रहा है आपको। प्रॉब्लम इज द सेग्रीगेशन। इफ समबडी ऑर्डर हलाल फूड, इट डजंट डिमांड कि नॉन हलाल वाला आदमी इसको डिलीवर ना करे। तो if you are purely हाँ a tech bro, then you will go by the market demand, मार्केट में डिमांड है तो मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊंगा। बट हाँ, इंडिया इज सच ए कॉम्प्लेक्स कंट्री, समथिंग एज सिंपल एज फूड डिलीवरी has become so problematic। राइट। तो अपने फ्लेवर भैया ने बहुत भारी सवाल पूछा है कि अरे, हाँ। अगर प्योर वेज डिलीवर कर रहे हैं तो ग्रीन कलर क्यों, भगवा रंग दे दो ना। सही अरे विचार है। अरे अरे,
क्लब पंजाबी से ग्रीन इज मुस्लिम कलर नो, हाँ वही, वो भी लोग का, या समवन सेड कि अभी सिर्फ फीट वाले को दाढ़ी मत दे दो, बात खत्म। जतिन सिंह, पेट्रोल पंप भी प्योर वेज होना चाहिए, जहां से जोमेटो वाला बाइक पे पेट्रोल। अरे प्योर वेज मतलब क्या, वो बंदे लोग प्योर वेज वाले हैं, वो जिन लोग आके डिलीवर कर रहे हैं, कि वो लोग सिर्फ प्योर वेज खाना डिलीवर करते हैं, क्या है ये? अरे प्योर वेज रेस्टोरेंट से आएगा, यानी जो अच्छा रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है ना, उस रेस्टोरेंट में शायद साथ में भी नॉनवेज नहीं बन रहा होगा वैसा। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ दैट इज प्योर वेज, हाँ। तो यानी ओनली कहीं पे, शाकाहारी। हाँ यानी कहीं पे भी किचन में यूटेंसिल में किधर भी कुछ भी ऐसा टच नहीं हो रहा है, ऐसा समझ रहे हो? ऐसा उसका उसका भाप भी नहीं आ रहा उसके ऊपर, अच्छा 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 वैसा। अच्छा। हाँ, तो अभी इतना आपको वो पर्टिकुलर है तो आपको घर पे खाना चाहिए ना, फिर आपको मंगाना भी है मार्केट से। बिग ग्रो कि आईआईटी मुंबई में ना अलग टेबल है कि ये टेबल पे नॉर्मल वो लोग अलाउड नहीं है बैठने का, अच्छा। या देन व्हेन और ये यू व्हेन, आईआईटी हाँ में ऐसा सब हो रहा है? पहले से हो रहा है मुंबई में है ऐसा। तो सब। उधर नॉनवेज वाला आदमी बैठ के अपना टिफिन नहीं खा सकता है, एंड द रीजन ये है कि हम लोग को उसका बात से उल्टी आता है। अभी क्या बोलोगे आप इसमें? You only make these rules which you cannot follow in public spaces, then you become a nuisance to other people. And I myself am a pure vegetarian myself, but again the word pure also is a problem, no? Because it implies कि बाकी लोग impure है। But खैर ये तो ये तो चलो शब्द का खेल है, बाकी I've always been a vegetarian my entire life because probably I was born in a family which is vegetarian. I've spoken about this in a reel years ago. But I wouldn't like no be so inner about it, no, because I would like it if more people are veg because I think it's good for the environment and fewer animals get harmed. I'm all for it, but I can't force people, no. And at the same time, I can't denigrate people who have it. It's just not practical. It's just simply not practical. अरे And अरे when you, आप हाँ ये बताओ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ मैं बात कर रहा था एक बंदी से, तो हाँ, अरे बंद, डायरेक्ट जोमेटो में बंदी पे क्या सेगमेंट। अरे आपको पता है जोमेटो ने क्या किया था 14 फरवरी को? उन्होंने बोला था कि अरे रिया ने भी आपके ऐसा 3 पालक पनीर ऑर्डर किया है, क्लिक हियर टू मैच विथ रिया। फिर उसके ऊपर क्लिक हाँ किया। हाँ, उसके ऊपर क्लिक किया आपने। फिर मालूम पड़ता है अप्रैल फूल बनाया उन्होंने ऐसा, कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे गाइस। ये फनी फनी तो है। मैं एक्साइट हो गया, बोला अरे ये कौन है ये पालक पनीर वाली हम भी। What? How can you ever be turned on? Like even if you end up meeting her, you दिमाग में पालक पनीर आ रहा है फिर। हाँ हाँ, वो आई थिंक इट्स चिकन चिकन दो प्याजा वाले को नहीं फाइट करेगी रिया। Veg jalfrezi, which is the worst dish of all. Veg jalfrezi means कल का बचा हुआ सब सब्जी एक साथ। SM ओनली is ग्रेवी। saying SM is saying नहीं, ओनली ग्रेवी वाला डिश भी है ना एक, उसका नाम है पनीर बटर मसाला, जिसमें सब्जी है ही नहीं पर फिर भी वो सब्जी। SM is saying, I suggest it is better for the food. Delivery guy comes, carries a spray bottle of Gaumutra around and sprays it at the delivery point in front of customer. बेस्ट बेस्ट। हाँ, आज तो लिख के भी आएगा, if your delivery partner did not spray Gaumutra on you, you get your money back. फिर अरे अरे पार्लर, मैं हाँ बंदी बंदी, हाँ वो मेन मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो हाँ बात चल रही है, तो देन मैं बस ऐसे ही बात करते करते, अरे तू नॉनवेज खाती है ना? तो शी इज लाइक अरे मैं ऐसा, आई एम एन एगिटेरियन। हाँ तो मैंने बोला ठीक है जो भी है, क्यों नहीं नॉनवेज खाती, तेरे घर वाले नहीं हाँ खाते, तेरा धर्म वर्म हाँ ऐसा? तो शी हाँ लाइक नहीं नहीं हमारे घर पे खाते हैं। मेरा बस वैसे हाँ हो गया कि अरे मेरे कुछ पेट्स है ऐसे, टर्टल वगैरह, फिश भी है,
और मेरे को ऐसा फिश खाने हाँ का मन नहीं होता, मेरे को बुरा लगता है जब मीट ऐसा वो होता है। मैंने एक दो हाँ डॉक्यूमेंट्री देखी है। तो वेट हाँ तो ऐसा ऐसा लड़की लोग को क्या बोलने का, रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है? आई मीन वेज है तो ग्रीन फ्लैग हुआ ना नहीं आई I think there's nothing wrong in it. No? ये बहुत भारी जोक है। अगर अगर एकदम जेरी साइनफेल्ड वाला जोक मारा है। आई मीन राइट राइट है फुल टॉस पे सिक्स मारेगा तो आई थिंक शी इज सेंसिटिव पर्सन बट अभी इसमें सिर्फ ये है एक प्रॉब्लम कि वो और दो डॉक्यूमेंट्री देख लिया तो वापस उसका दिमाग पलटी हो जाएगा तो क्या करोगे तो डॉक्यूमेंट्री बहुत है आजकल ऑनलाइन हाँ, वो ठीक है ना इट्स फाइन somebody's वही ये बह consciousness is जाती है। नहीं बस if somebody's consciousness shifts because of something that they watched and they become more sensitive, that's fine. How else does someone become more sensitive? No, through a life tragedy, no, tragedy in their personal life, maybe सबको वैसा नहीं मिलता मौका. I myself remember that when I was doing my very first job after MBA, there was this documentary called Zeitgeist that had come out. And it had three हाँ parts in it, and it really changed my entire worldview. Because maybe I was not that exposed to conspiracy theories before that, but the way it was all packaged together, and no, I think they use a lot of George Carlin's audio recordings in the background. I did not even know who George Carlin was at that time. The stand-up in India he हाँ नहीं था वो time पे, but it was still so powerful. No, what George said about God in politics and a lot of other things. So maybe that's what it takes. It takes a documentary. So, and I was not like a spring chicken at that time. Was the first job, and I was past my 20s already at that time. No, but I was still so ignorant compared to today. So, sure, there is one documentary called Seaspiracy on Netflix. No, they talk about commercial fishing and how it is destroying the oceans हम्म completely, and how they treat the fish on board like बिल्कुल कचरे की तरह काटते हैं. So many people have not felt like having seafood after that, and I think it's all fine. No, you should know it. No, why not? हम्म So I don't think this is a red flag. I mean, unless you're one of those people who thinks कि वेजिटेरियन लोग चूतिया ही होता है तो फिर ठीक है. I mean, then it just does not work. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, There's ऐसा no कुछ right नहीं। or wrong in this. Salman Khan, okay, Salman Khan is saying after. I mean, it is late. Maybe I'm seeing things. Salman Khan is saying after 2024 elections, trees will be painted orange in Uttar Pradesh. Yeah, I wouldn't be surprised. Uh, are we अरे missing बाप anything? अरे विनीत is saying चीज केक में एग्स होते तो सेट है जेमी के लिए. ये जापानीज चीज केक में एग नहीं होता है क्या? आजकल नहीं चुका, आजकल मैं काजू कतली बर्फी केक खिला रहा हूँ। What? हाँ। क्या एमएम मिठाई से लेके क्या क्या हो रही है? शिट. कोई तो ये भारी रेस्टोरेंट है। बांद्रा तो मदार शिफ्ट कैसे हो गया? बट चल रहा है काम। Sandesh is saying if painting orange makes people care more about trees, I'm all for it. Just make people care for environment. एगलेस चीज केक आता है क्या? हाँ आता है ना, प्योर वेज आता है चीज केक। प्योर वेज चीज केक. अच्छा, तो जापानी चीज केक जो इतना मार्केट में हल्ला हो रहा है वो उसमें एग होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बहुत फ्लफी फ्लफी रहता है एकदम। विदाउट एग? नहीं होता नहीं, है. एग ओके ओके. एग अच्छा होता है। एग. अच्छा अच्छा अच्छा. उसमें रहता है. ठीक है. जतिन इज सेइंग जस्ट अ जोक. अगर उस लड़की ने चाइल्ड बर्थ की डॉक्यूमेंट्री देख ली तो नसबंदी करवा दे. अरे भाई भाई। अरे 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 अरे.
अरे काफी काफी ब्रूटल। आई थिंक 1 घंटा अभी हो गया, अभी मेरा भी आंख बंद हो रहा है। आई शैल कॉल इट अ डे। Just to remind you guys, my trip is about to end. Second last show is tomorrow in Perth. In case you know anybody, आपका कोई भुला भटका रिश्तेदार भी होगा तो उनको बताइएगा. I'm doing it in a place called Fremantle, which is a beautiful place. There's a beach and a lot to see there, so it's a good location as well. Next week, Melbourne, उसके बाद Singapore, and then back home. So if you're in any one of these three cities, Perth, Melbourne, and Singapore, do tell them about my show. The link is there in the description. And a special is ready, but मुझे टाइम नहीं मिल रहा है एडिट पे बैठ के रिलीज करने का यहाँ पे बैठे हुए. बट as soon as I'm back, if not slightly before that, I shall release some major new stand-up videos. Till that time, CFBR, do like the stream, share it with people who you know are fellow satsangis. I keep meeting quite a few people who say they follow the satsang from across the world. So that's good to know. And I hope this has been an hour that was worth your time. And if you have any suggestions for the topic we should take up next week, do tell us. Uh, this live is coming to you from the state of Western Australia, which will never happen again. Next week, I'll be somewhere else and I'll try to catch you from there as well. Can we have a Twitter thread and book recommendations by you? Well, already Insta पे है recommendation, तो if you just DM me, I can share the list with you. बाकी कभी फुर्सत रही तो it's not a bad idea to put a thread out. Why not? Good. Anything else, Jamie? Any question that we have missed? नहीं नहीं, sorted. ठीक है. All right, great. Thank you all for being here. Do like the stream one last time and do comment once the stream is over offline so that we can reach people who watch later. Not everybody can join at the same time, but a lot of people have told me that I do watch later when they have the time. So see you all guys next time. Keep the hope, keep fighting the good fight. Lot of it is lost already, but not all of it. और देश की मिट्टी बुला रही है तो आ ही जाएंगे हम अगले महीने तक. तब तक मिलते हैं. Sam Harris, Swapnil is asking. Chalo, ठीक है, एक last. Sam Harris has done some groundbreaking work on consciousness as far as the Western world is concerned. Eastern world has a very different view of consciousness, and now they seem to be converging at one point, which is good to see. But recently, I think politics-wise, Sam Harris ने थोड़ा हक दिया, and like I think it was about corruption, and what he essentially said was that if defeating Trump means that we have to unsee the corruption on the Democrat side, that is okay. Like to something to that effect, from what I remember. And he lost a lot of goodwill when he did that, which is understandable. So now he has to recover from that. Like this is overall public uh, sphere, his perception. Let me put it that way. But I've not read any of his books. I've only seen interviews, so I really can't tell much. But we need people like him who don't just talk about consciousness like a lot of people do, including our multi-dimensional guru, but he actually does work on it. Plus, Sam Harris has a lot of apps on meditation, which people have said are quite good. Now, people who use these apps have told me that they find his app in particular quite useful. So, even practically, banda kar raha hai na. But I think Eastern philosophy is far ahead of the West in this. West का वही है कि they will try to deconstruct everything into its constituent parts. So there is a Nobel laureate Roger Penrose, who's a physicist of the highest order. He's been doing research on trying to define consciousness in the chemical material terms. And he's written an entire paper on how a certain enzymes which he can link consciousness to, which work at the end of the neurons in the brain, like that level. And I like that approach also because that is taking science to its logical end. कि अगर आप, if you want to define something as complex and as subjective as consciousness, also you try to do it through purely
research terms, no, but they didn't get proved that way. And again, even if you can somewhere triangulate this is where consciousness comes from, you still can't define what it is exactly and why different people feel differently. So I think Sam Harris is doing important work on the Western world, but unless I think you assimilated a lot of Eastern philosophy and the Eastern approach to consciousness, especially the Buddhist approach, I think you're missing a lot. But having said that, my own consciousness is taking a beating now. I'll have to go and sign off. Thank you all for being here and thank you all for your questions. We'll see you again soon with Jamie and his cheesecake. Thank you. Good night.